Good morning everyone. So this is Amit Meena, PGT Chemistry from Kendriya Vidyalaya Gangapur City. So today here we are with our new topic, synthetic fibers and plastic, from the chapter 3rd. The chapter's name is also synthetic fibers and plastic of 8th class. So here in this video we will try to understand some fibers. So fibers are broadly classified into two categories. First one is the natural fiber, another one is the synthetic fiber. So you can see natural fibers किसको कहेंगे? Natural fibers are those fibers which are obtained from plants and animals. It is very simple to know, which are obtained from nature. Nature means plants and animals. Example: cotton, wool, jute, silk, etc. And what about the synthetic fibers? Synthetic fibers are the fibers which are man-made. Mainly they are artificial fibers and they are made by the processing of chemical substances. For example, nylon, rayon, polyester, acrylic. These are what? The examples of synthetic fibers. Synthetic fibers consist of a chain of many small units. You can see the chain of paper clip here. It has so many pins, so many clips here. The same way, chain of beads. You can see the small units are there. So all these small units are forming this chain. So these smaller units are called as monomers. So all these small units are joined together to form this chain, and the chain is called as polymer. We are calling the complete chain is a polymer. Now, types of synthetic fibers. Synthetic fibers are of following types. So some synthetic fibers we will study in our this video. First one is the rayon. Rayon is known as artificial silk. You can see here artificial silk. Why it is called as artificial silk? So let us study this rayon. Rayon is a synthetic fiber made by the chemical processing of wood pulp. First of all, it is made by the processing of wood pulp. Since the rayon has similar properties to silk, so it is called as artificial silk. समझ में आ ही गया होगा आपको. एक तो ये वुड पल्प की प्रोसेसिंग से बनता है, पहली चीज. दूसरी बात यह है कि ये दिखने में सिल्क के जैसा है. इट लुक्स लाइक सिल्क, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क. और मजे की बात यह है कि ये नेचुरल सिल्क से काफ़ी सस्ता होता है. इसके यूजेस: it is used for making dress materials, it is mixed with the cotton for making bed sheets, curtains, etc. It is mixed with wool for making carpets and mats, etc. So this is all about the rayon. Next one is the nylon. So nylon is another synthetic fiber made from coal, water and air. It is light, strong, elastic, lustrous and easy to wash. नायलॉन की सबसे अच्छी खूबी ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग होता है, शाइनी होता है, लशरस होता है. नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर. और इसके यूजेस क्या क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, कर्टेन्स, सॉक्स, रोप्स, ब्रशेस, belts, bags, tents, parachutes, etc. So parachutes, especially parachute, ropes, these are the articles which are example of, or we can say these are the examples which proves that nylon thread is very stronger, or we can say nylon is a very strong synthetic fiber. Next one is the polyester. Polyester is a synthetic fiber made of small units called ester. नाम से ही पता चल रहा है, poly means many, ester means smaller units जो है वो ester की हैं. So made up of many small units called ester. It is light, strong, elastic,
easy to wash and does not get wrinkled easily. बहुत ही ज़बरदस्त बात है इसमें पॉलिस्टर में कि ये जल्दी से wrinkled नहीं होता और easy to wash है. It is used for making dress material. आपको पता है मार्केट में पॉलिस्टर के कपड़े अवेलेबल होते ही हैं. It is mixed with the cotton to get polycot. Polycot में पॉलिस्टर और कॉटन दोनों का मिक्सचर होता है. And polywool is a mixture of polyester and wool. The two common polyesters are terylene and PET. PET का पूरा नाम है polyethylene terephthalate. दोनों के uses. Terylene is a polyester used for making dress materials, while the PET, polyethylene terephthalate, used for making bottles, utensils, films and wires. You can see here the examples are shown here with a picture. Next is acrylic. Acrylic is another synthetic fiber which is called as artificial wool. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लुकिंग जो है वो कैसा है, वुल की तरह है. It is cheaper than wool. It is used for making sweaters, shawls and blankets. Characteristics of synthetic fibers. Synthetic fibers are light, strong, elastic, durable, absorbs less water, dries fast, easy to maintain and is less expensive. वजन में हल्के होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं. ड्यूरेबिलिटी इनकी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है, वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं तो धोने में आसानी होगी, जल्दी से सूख भी जाते हैं और सस्ते होते हैं. लेकिन इसी के साथ सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. क्या है? द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट दे कैच फायर इजीली. The fabric melts and sticks to the body, so we should not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. कहने का मीनिंग ये है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं उनमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. इसी वजह से वो जल्दी से हीट के प्रेजेंस में मेल्ट हो जाते हैं और गर्म होकर के बॉडी से चिपकने लगते हैं. सो बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी है. सो स्पेशली किचन में और लैब में काम करते वक्त इसको यूज़ नहीं करना चाहिए. सो इस वीडियो लेसन में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट इन अदर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्लास्टिक्स. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.